ओके कल हमने जो पेन किया था अपना जहाँ पे स्ट्रेट दैट वाज इसको साइड तो साइड पे कर सकते दिस वन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपसे कहा था इसको देखना इफ यू गॉट एनी कंफ्यूजन देयर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई इश्यू है अगर किसी पॉइंट पे यू मीन सारे पॉइंट्स क्लियर हैं ओके फाइन लेट्स मूव टू द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसको 5 मिनट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें से करना है आपने ओके सो दैट इज व्हाट सो नथिंग इज हेल्थ डिफरेंस एक्सेप्ट आपको आइडिया होगा वहां पे हमने डिस्कस किया था दैट वाज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी supply due to percentage change in price right percentage in quantity supply due to percentage price and बाकी सारे वही इलास्टिक more elastic less elastic तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी सप्लाई है बीइंग अफेक्टेड बाय द change in percentage change in its on price so that means कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जस्ट ये डिफरेंस है आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट डिफरेंस ऑफ सप्लाई अदर और इधर आपने देखा होगा डिफरेंस ऑफ सप्लाई लाइक सो इट इज ओनली द डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है इलास्टिसिटी सप्लाई और डिमांड में बाकी मेथोडोलॉजी वही है फॉर्मूला वही है पॉइंट इलास्टिसिटी आर्क इलास्टिसिटी जो मेन डिफरेंस इसमें आएगा वो अगेन इसके डिटर्मिनेंट्स हैं सो इसके आपने डिटर्मिनेंट्स भी देखने हैं और जिन जिन मैं असल में आपको इस कॉन्टेक्स्ट में गाइड कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों पे डिटेल फोकस करनी है वो उन पे फोकस करूंगा और जिन्हें आपकी रीडिंग बेस करना है वो फिर आप रीडिंग करके जहाँ क्योंकि आप पोस्ट रिजल्ट में हो तो पोस्ट बैच में हमें फिर इस चीज़ को देखना होता है कि रादर गोइंग फॉर दी थॉरो स्टडी हम उसको सिलेक्टिव करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट क्यूरी ओके यू गेटिंग माई पॉइंट ना फाइन सो आपको इसमें वर्किंग करना पड़ेगी पोस्ट बैच में दो काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा बल्कि तीन कर लें तीन चीजें पोस्ट बैच में बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वन स्टूडेंट माइंड इट वन स्टूडेंट मैंने इसको वन टीचर नहीं कहा वन स्टूडेंट सेकंड टीचर और थर्ड इसमें आप इन्वॉल्व कर लें सिस्टम को इसमें मटेरियल को कर लें आप अपने नोट्स को कर लें बुक्स को कर लें ये थर्ड है जो सबसे कोर होगा ना प्लेयर इसका वो पोस्ट बैच में वो स्टूडेंट होना चाहिए स्टूडेंट असल में कौन है स्टूडेंट आप हैं स्टूडेंट को क्यों मैंने टॉप 1 पे रखा हुआ है असल में आप नहीं पास कर सके 2-3 अटेम्प्ट्स में तो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो आप ही को आइडिया है ओके तो पोस्ट बैच में स्टूडेंट इज इन फैक्ट दी ऑन फ्रंट सो दैट्स व्हाई आप मुझे ड्रैग करोगे लेफ्ट राइट और जहां जहां मैं मूव कर रहा हूं और सेकंड मैंने टीचर को इसलिए कहा है कि टीचर की जजमेंट होती है कि किन वीक एरियाज को स्टूडेंट यूजुअली कोप नहीं कर पाता और रिजल्ट्स एडवर्स आते हैं और उसी को आइडिया होता है कौन से कोर एरियाज हैं जिन्हें फोकस करके टीचर को चलना है rather going for the wastage of time मैं बिला वजह दाएं बाएं के पॉइंट्स पढ़ाते रहें सो प्लीज माइंड इट एक तो ये हमारा 1 आवर जो होता है ये बड़ा प्रेशियस है लेकिन आप काइंडली इसमें फ्रंट एंड पे हैं आप फ्रंट एंड पे हो ड्राइविंग सीट पे आप हो आपने दो काम करने हैं एक जब मैं कहूँ कि ये रीडिंग करो तो मैंने एज्यूम किया होता है कि ये रीडिंग करेगा स्टूडेंट तो फिर आपको रीडिंग कर लेनी है फिर मैं कहूँ कि प्लीज टेल मी योर कंफ्यूजन एंड कंफ्यूज और एनी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स
तो आप मुझे वो पॉइंट्स हाईलाइट भी करो। मैंने आपको उस दिन कहा था कि काइंडली इफ यू फील सम कंफ्यूजन्स, कोई पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, आप उनको चैट बॉक्स में कहीं टाइप करके रख लें अपने पास कि सर ये 6 7 5 3 2 5 जितने भी हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। तो मैं फिर उसको सामने मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी, मैं उसको अपने पास पेस्ट करूंगा और पेस्ट करने के बाद उसको वन बाय वन एड्रेस करता जाऊंगा। आप ओके नो के साथ मेरे से मूव करेंगे। सेकंड काम जो आपको करना है, ड्यूरिंग माय लेक्चर्स जिन टॉपिक्स में मैंने कहा जी इलास्टिसिटी कंप्लीट कर दी मैंने, अब इलास्टिसिटी कंप्लीट होने के बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि सर इसमें ये वाला जो एरिया था ये मेरा इनफैक्ट वीक था। आपको मुझे बताना है, मैं टेस्ट लेते हुए आपको जो टेस्ट प्लान करूंगा तो टेस्ट में वीक एरिया को फोकस करूंगा फिर, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है मेरी आपके सामने कि मैं आपको जज कर पाऊं। सो प्लीज माइंड इट, आपने मुझे मूव करवाना है साथ साथ अपने। ऑनलाइन क्लास है, इसमें मेरा फिजिकल डिस्टेंस है, तो मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प ये चाहिए होगी कि आप अपने प्रॉब्लमेटिक वीक एरियाज को काइंडली मेरे साथ साथ करें। सेकंड, जहां मैं कहूँ कर रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, जहां मैं कहूँ कि आप अपने कंफ्यूज या टेंशन वाले जो पॉइंट्स हैं, एम्बिगुएट पॉइंट्स, उनको काइंडली कॉपी करें और मुझे डेली बेसिस पे अपलोड कर दें। राइट, मैं उसको अपने सामने रख लूं और उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन हम डिस्कस करते चले जाएं। और जैसे नहीं होगा आप मुझे ओके कह देंगे, मैं रूटीन में नेक्स्ट टॉपिक, लाइक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इस तरह आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। ओके, सो द टॉपिक इज market equilibrium. Market equilibrium stands for what? Where QD is equal to QS. मार्केट इक्विलिब्रियम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यूजुअली टेस्ट होने का होता है हमें, what we can anticipate, that is surplus and shortage. ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज के साथ क्वांटिटी डिमांड वाइस पर्सन में इन्वर्सली मूव करेगी और सप्लाई पॉजिटिवली। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, आपको आइडिया होगा कि मैंने लॉ ऑफ सप्लाई नहीं करवाया आपको। राइट, उसकी मुझे आइडिया है ना कि लॉ ऑफ सप्लाई में कोई ऐसी चीज थी नहीं जो मैं आपको 2-3 अटेम्प्ट पे पढ़ने के बावजूद आपको ना आती हो। और लेकिन अगर आपको लगे कि वो मिसिंग है सर, उसमें मुझे एक दो चीजें पूछनी है, कोई बात नहीं, उनमें से आप वो पॉइंट काइंडली मुझे जरूर यहाँ पे अपलोड किया करो, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मूव किया करूँ। अब यहाँ पे प्राइस की एक एक्शन में डिमांड और सप्लाई का इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इनवर्स रिलेशनशिप में दो ऑप्शंस हैं, कहीं डिमांड ज्यादा है, कहीं सप्लाई इज एक्सीडिंग ओवर डिमांड, और कहीं पे ये इक्वल भी है। सो इनफैक्ट जहां पे ये इक्वल है यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट इनफैक्ट, और लेकिन इससे ऊपर नीचे देखें आप, प्राइस अगर 10 हो और प्राइस अगर 30 हो तो दो ऑप्शंस और भी हैं। इफ प्राइस इज गोइंग टू बी डिक्रीज बाय 10, ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड तो बढ़ेगी, कंज्यूमर इनकरेज होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो इट इज व्हाट इनफैक्ट शोइंग, इट इज शोइंग डिमांड इज मोर देन सप्लाई, और इट इज इनफैक्ट व्हाट
शॉर्टेज कि डिमांड एक्सीडिंग ओवर सप्लाई, सो दैट मीन व्हाट, शॉर्टेज। तो शॉर्टेज हो रही है मार्केट के अंदर। वजह क्या है, प्राइस आप देखें इस साइड पे, ये प्राइस आपकी कम हुई है 20 से 10 रुपीज। अब प्राइस 20 से 10 रुपीज हुई है तो डिमांड एक्सीड कर रही है। अब डिमांड जब एक्सीड करती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। आप देखें यहाँ पे 300 है और सप्लाई क्या है 100, तो 300 इज मोर देन 100। बायर ज्यादा हुए, सप्लाई डिस्करेज होकर निकाल के ले गया, सो इट इज व्हाट इन फैक्ट शॉर्टेज, राइट। लेकिन दूसरी साइड पे देखें, अगर प्राइस आपकी 30 हुई, 30 प्राइस में आप चेक करें, बायर जो है वो डिस्करेज हुआ और सप्लायर इनकरेज हुआ, और इट इज गोइंग टू बी व्हाट, सरप्लस। शाबाश, गुड। सो इनफैक्ट प्राइस राइज और प्राइस फॉल से आपका बायर और सेलर जो है वो इनकरेज और डिस्करेज हो रहे होते हैं। तो मीन वाइल अगर डिमांड एक्सीडिंग ओवर सप्लाई है तो वो शॉर्टेज होगी, और अगर सप्लाई एक्सीडिंग ओवर डिमांड है तो वो सरप्लस होगा। सो हम इसको एक ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे आपको देखना है कि इस एरिया में और इस एरिया में, इन दोनों एरियाज में देखें, अगर आप इसको देखें तो ये प्राइस आपकी 10 है, तो ये तो इक्विलिब्रियम हुआ। अब इक्विलिब्रियम तो हो गया आपका, लेकिन इक्विलिब्रियम तो आपका हो गया ये, लेकिन इससे ऊपर और नीचे आप देखें क्या है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको सरप्लस नजर आएगा, क्योंकि इस प्राइस पे सप्लाई इज मोर देन डिमांड, और यहाँ पे डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो यहाँ पे आपका शॉर्टेज है और यहाँ पे आपका सरप्लस। ओके, यू कैरिंग बुक राइट नाउ? ओके, तो उसमें आपने साथ से इन चीजों को भी देखना है कि उनमें जो टेबल्स डायग्राम्स हैं। लेकिन यहाँ तो ये कंप्लीट हुआ सरप्लस एंड शॉर्टेज। इसमें से ड्राइव क्या, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा ड्राइव होता है वो लिखिएगा, काइंडली टॉपिक लिखो। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स and effect on market equilibrium, market equilibrium. Done? Okay. In fact, non-price factors, might you remember, non-price factors, you remember, डिमांड के भी हैं और सप्लाई के भी हैं। लाइक डिमांड साइड पे में आइडिया होगा आपको भी, एक कंप्लीट लिस्ट आपको आइडिया होगा उसका, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, फैशन एटसेट्रा। सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। और सप्लाई के भी नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं कुछ, उसमें टेक्नोलॉजी,
complements, raw materials, wages, etc. राइट. सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो इनफैक्ट कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई को अदर देन प्राइस इफेक्ट कर रहे होते हैं. सो दीज आर व्हाट इनफैक्ट these are known as what? Non-price factors. अब प्रॉब्लम ये आपको याद होगा, नॉन प्राइस फैक्टर से सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होता है और डिमांड कर्व भी शिफ्ट होगा. आप मुझे जरा वन बाय वन बताएं. इनकम, जी प्लीज. यस, नहीं इसमें सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, मैंने नहीं कहा कि नहीं होते. सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्पोनेंट्स यू कैन से. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. तो अगर टेक्नोलॉजी का सब्स्टिट्यूट, लाइक आपके पास कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर थे ना टेक्नोलॉजी में किसी दौर पे, और उससे पहले क्या था? टाइपराइटर्स. अब टाइपराइटर्स ने सब्स्टिट्यूट कर दिया कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटर से सब्स्टिट्यूट हुआ लैपटॉप्स. लैपटॉप से आप लोग टैब्स पे आ गए, पाम टॉप, आईपॉड, इस पे आ रहे हैं. तो एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी से आने से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है ना. राइट. सो दैट्स व्हाई नो प्रॉब्लम एट ऑल. सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्पोनेंट यू कैन इवन से नो, इसमें कोई इश्यू नहीं है. यू कैन राइट इवन सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर में आपको आइडिया है कि वो पेयर ऑफ बुल्स यूज हुआ करते थे वुडन प्लो के नाम से. सो दैट वाज अ ट्रेडिशनल कल्टीवेशन. फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया आपने ट्रैक्टर से. अब ट्रैक्टर से आगे चले जाएं तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहे हैं. सो टेक्नोलॉजी के भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. सो इसमें हम ये नहीं कह सकते, उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी कम और ज्यादा होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, राइज एंड फॉल होते हैं. ओके, गॉट इट. नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, जस्ट टू और थ्री थिंग्स. इनकम के इंक्रीज से व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. Demand curve is like this. Will it shift right or left? Right. So it is what in fact? This is. This is in fact not this one, because ये आपका जो first one था that was leftward. So that's why income के increase से आपकी demand curve rightward shift होगा. Population से, population के increase से ओके. एंड टेस्ट, फैशन, अब सब्स्टिट्यूट्स. हाँ, सब्स्टिट्यूट्स, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कमोडिटी एक्स एंड सब्स्टिट्यूट इज वाई. सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? If the price of y as a substitute, listen carefully again. If price of y as a substitute of x increases, what would be the effect on demand for x? Increase or decrease? Increase. रीजन क्या है? लोग इससे डिस्करेज होंगे और मूव करेंगे x पे. सो x की डिमांड इंक्रीज करेगी. और कॉम्प्लीमेंट की प्राइस, लाइक z इज अ कॉम्प्लीमेंट. ओके. सो कॉम्प्लीमेंट की प्राइस अगर इंक्रीज हो, then demand for x. No, negative positive nahi. Simply, if price of z increases as a complement, so demand for x, what would be that? Carefully, इसको और करके आंसर करना है मुझे. z is a complement of x. So as price of z increases, what would be the impact of this on demand for x? Why?
Yes, use together. अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है तो people will definitely try to use less of Z, like CNG and CNG kit. So if you are not using CNG, then why should go for the CNG kit? So all you are using together complementary. So that's why you will not definitely go for this. Okay, it is all about the demand rise and fall. And what would be the case of supply? Like technology advancement हो जाए, technology advancement हो जाए, the technology which is used for supply of X. Now, first listen carefully. We are talking about the technology which is used for supply of X. If the advancement is going to happen for the technology which is used for production of X, what would be the impact on supply of X? Increase or decrease? Increase, obviously, because you are using that technology which is more efficient, more productive. So production increase होगी. Substitute complement raw materials. Suppose raw material की price fall हो जाए, the raw material which is used for the X product, so उसकी price कम होने से what would be the impact on supply of X? Increase, obviously, because you are using that raw material and the price are going to fall, आप motivate होंगे and you will try to produce more. So it was totally about the rise and fall due to the non-price factors. Now the question is, what would be the impact of these changes, rise and fall, on equilibrium price and equilibrium quantity? We'll start with this diagram. आपने ड्रॉ करनी है पहले डायग्राम मेरे साथ साथ. You're drawn? Okay. This is what in fact P1 is equilibrium price and Q1 is equilibrium quantity and the E1 is first equilibrium. After some changes, what will happen? Like due to increase in income of consumers. Yes. Now tell me one thing. The factor is income of the consumers. This factor will affect to what? Supply curve or demand curve? Question number one. चलो ये तो वो तो right होगा. Yes, demand. Demand curve would be shift right or left? Right, like this. Okay, it would be your new equilibrium. Okay, so answer is what? Increase in price and increase in quantity. It means if the income of the consumers is increasing in the in an economy, it would positively affect to the price and quantity. Obviously, price भी increase होगी और quantity भी increase होगी because equilibrium is shifted to E2. Got it? Now you will draw the diagrams by yourself. I'll just give you some cases and you have to respond me what would be impact of this change in price and quantity. Okay, just rise and fall, fall and rise, both rises, one both falls, whatever. Okay, you will write, you will draw, you will find out the result. Just reveal your result on chat box. Question number one. Government has imposed
Government has imposed a new tax on raw materials. What would be the impact on price and quantity? First आप चेक करो कि क्वेश्चन में I have said that government has imposed a new tax on raw material. So raw material is a matter of buyer or producer. Producer. So why you are saying demand shift inward? Demand is a matter of buyer, not producer. Right. So that was the confusion. No? That was in fact the confusion. Okay, you got it now? Now I am repeating the question. Government has imposed a new tax on raw materials. What would be the effect? तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना होता है? पहले आप चेक करें कि क्वेश्चन के अंदर जो इशू है, to whom it is in fact affecting, buyer or seller or producer. So buyer concerned with demand curve and yes, and supply producer. So उसके बाद आप देखोगे whether it going to be right or left. Then you will get new price and quantity. Okay. Now the question number 2 is, government has announced a subsidy on raw material for X commodity. Now, what would be the impact of the price and quantity of X commodity in market? What increase? Yes, and price, what about price? Have you drawn diagram? Let me draw the diagram for that case and please अपने case से इसको compare करो. It was your first equilibrium Q, P, E1, D1, S1. Okay. Now government has announced a subsidy. Subsidy means concession. Concession on raw material अगर अनाउंस होएगी तो प्रोड्यूसर इनकरेज होगा, डिस्करेज होगा? एनकरेज. तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज? So S would be here and E would be here and B would be here, Q would be here. The answer is what? Fall in price and increase in quantity. Now got it?
मैच? आंसर इज नॉट मैचिंग। हाँ, नहीं, आपने जो पहले ड्रॉ किया था उससे आपका ये डायग्राम मैच हुई है, लेकिन आंसर मैच क्यों नहीं हुए? ओके फाइन, माइट मेरी थोड़ी उसमें अंडरस्टैंडिंग में हो। नेक्स्ट केस करते हैं। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड a 10% new income tax what would be impact on price and quantity? पहले चेक कर लो इसका इम्पैक्ट डिमांड साइड पे आएगा, सप्लाई साइड पे, देन रिस्पॉन्ड माय क्वेश्चन। एंड क्वांटिटी, यस। रीजन ये है कि उनकी परचेजिंग, कौन सा कर्व चेंज किया आपने, डिमांड साइड या सप्लाई साइड? व्हाई? इनकम टैक्स कंसर्न विद बायर्स, माइंड इट। ये थोड़ी चीजें होती हैं, सारी बात ये थोड़ी है, इसमें कंफ्यूज स्टूडेंट्स को भी होती हैं। इनकम टैक्स कंसर्न विद माइंडेड फिक्स्ड इनकम ग्रुप, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन पे या तो सेल्स टैक्स होते हैं, राइट, या उनके फिर प्रॉफिट टैक्सेस होते हैं। इनकम टैक्स, द वर्ड इज यूज फॉर यूजुअली कंज्यूमर्स एंड बायर्स फिक्स्ड इनकम ग्रुप। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम इनकम स्टैंड फॉर, आपने देखे होंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने इनकम लिखा हुआ था, सप्लाई में डिटर्मिनेंट्स के अंदर इनकम लिखी हुई थी हमने। इनकम का ताल्लुक सप्लाई साइड पे नहीं होएगा, इसको एग्जैक्टली हमने डिमांड साइड पे ही लिखना है। सो इट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ बायर्स, नॉट सेलर्स। माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, there is a rumor, there is a rumor that that sugar would be available at high price after this week. What would be the impact on price for sugar this week? The question is, it is a rumor that the sugar will be available at high prices after this week. What would be the impact of price and quantity of sugar this week? Both increases. Yes. अच्छा, impact on what? Supply side or demand side? Yes, people try to what? More demand or less demand this week?
Good. Okay. Next question is, the last question is, government has introduced LPG as a substitute as a substitute of CNG at some low prices. What would be the impact on price and quantity for CNG? I'm repeating the question. First try to, it's okay. Then why are you responding abruptly? नहीं, tell me one thing. एक तो ये कि आप इतना spontaneous respond ना करें. अच्छा, एक तो ये ध्यान रखो कि आपने इतना abrupt respond नहीं करना. सेकंड ये है कि आप अपना क्वेश्चन फॉरी चेंज ना, आंसर फॉरी चेंज ना किया करें. थोड़ा सा देखा करो. क्वेश्चन इज, government has introduced LPG as a substitute of CNG at some low prices. What would be the impact on P and Q for CNG? अब जो वन बाय वन रिस्पॉन्ड करें. डिमांड फॉर CNG will increase or decrease? क्यों? LPG के रेट्स कम अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, और LPG CNG का सब्स्टिट्यूट है, तो लोग स्विच करेंगे LPG पे या नहीं करेंगे? Will they or not? Obviously they will. So CNG से quit हो रहा है and switching over to LPG, isn't? Then CNG demand excuse me, hello, look at diagram. It is what? Demand and supply for CNG. Now what? Government has announced LPG at some low rates. So people discourage for CNG or encourage for CNG? Discourage. They will try to have more CNG or less? Less. Demand curve for CNG will shift inward and price will come from P1 to P2. So what it is? Fall in price or rise in price? Fall. So up check your answers. What? Yes. Was that wrong or right? That one. Wrong. Right. Now you got it now? So that's what, please. First try to understand the question. उसमें तीन चीजें आप चेक करें स्टेप वाइज. फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना है कि whether it is affecting to demand or
सप्लाई, वो कहाँ से चेक होगा? चेक करेंगे दैट फैक्टर इज इन फैक्ट ऑफ डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन. ओके. And second stage, whether it is going to discourage or encourage, rightward or inward. Then curve आप draw करें. Third stage पे you have to drag down and drag left. वहां से price and quantities derive होंगी. Okay, got it? Fine जी. See you tomorrow right from here. It is 11:25. और कल हम इंशाल्लाह ताला प्राइस रेगुलेशंस, बफर स्टॉक एंड कॉबवेब, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? और चेकआउट बुक से देखिएगा. इवन यू आर फीलिंग सम एम्बिग्विटीज एंड प्रॉब्लम्स, देन उसको कॉपी करें, अपने पास टाइप करें, देन सी यू टुमारो. अच्छा, इज इट पॉसिबल, कैन आई मीन हैव योर पिक? आई मीन यहाँ पे कोई ऑप्शन है कहीं आप अपनी पिक कैप्चर करके सिर्फ फेस, उधर हमें एक इजी रहता है स्टूडेंट के साथ. जस्ट एक पिक चाहिए मुझे, वेब कैम नहीं चाहिए. एक पिक आप यहाँ अपलोड कहीं कर सकते हो. एनी डे, जस्ट फॉर वन. I want to scan your face in my mind. No, I'm not using WhatsApp, and but I can check. Yes, I have in my cell phone, but मैंने कभी एक्टिवेट नहीं किया हुआ कोई नेट अपने सेल फोन पे. नो नो FB, एब्सोल्युटली नॉट. ओके, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो. नो 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 नो, जस्ट no no, I'm just using my emails, right? I don't have any WhatsApp, FB, Twitter, Viber, whatever. So please आप मुझे कहीं चलो WhatsApp कर दो, मैं कहीं बैठ के कनेक्ट करूँ इस वाईफाई पे, तो I'll see. Okay? You have my number already. Okay, 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 fine. I'll set your profile. No. Okay, fine. आप मुझे WhatsApp कर दो बस अपने पे, एनी पे. वो जरा मुझे ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग में फेस माइंड में आएगा कि कौन स्टूडेंट है मेरी बात को भी सुन रहा है. इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं मेरी, मैं उनसे भी कहा है कि आप मुझे नहीं बट. ओके, सी यू. आई एम गेटिंग लेट. थैंक यू वेरी मच. सॉरी टू